लाईव्ह थोडा पॉज नाही करू शकत का लाईट विनाकारण Supreme Court judgment last year or 2018? 2018. The judgment in here we are talking about decriminalization of adultery under section 497 of IPC, that is the Indian Penal Code. So Indian Penal Code now ये subject जो है IPC पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो भी sections लगते हैं ये section के अंदर ये गुनाह किया है under what? It is under what? It is under IPC. But अभी that subject is called as BNS, भारतीय न्याय संहिता. Now this topic is a very important topic. Patriarchy on trial, how Joseph Frank changed Indian criminal law. Now everyone here, we always talk about that. Let us talk to the basic part. Let us start with the basic part. Or who says that men and women are equal before law? Which article tells you men and women? You say now men and women are equal before law, irrespective of caste, color, sex, creed, religion. Article 14 क्या बोलता है? All men and women are equal before law. Men भी equal है और women भी equal है. Yes. कोई भी caste का हो, color का हो, sex का हो, religion का हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी है, Article 14 बोलता है all are equal before law. बराबर है? You all understood this? आर्टिकल 15 जो उसका नेक्स्ट वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी मेल हो या फीमेल हो, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. There should be no discrimination on the ground of caste, sex, religion. Yes. So two articles clear. Can we move ahead with this? Two articles I told you, Article 14 and Article 15. So here we talked about equal rights. Article 14. Men and women are equal before law, and Article 15 बोलता है men or women irrespective of caste, color, sex, religion, there should be no discrimination. Clear all of you? Yes. Okay. Let us move step by step, very short and sweet. Okay. Now background before I start. So before I start with the background, you have to understand what the topic is all about. Section 497 IPC का Indian Penal Code का Section 497
1997, what was it talking about? We have to see this. Now, adultery, as everyone has a question mark, what is adultery? So we have to understand the meaning of adultery. Yes, so what is adultery? Short story में should I explain you what is adultery? Yes, adultery is basically because an offense, एक गुनाह था under section 497 of IPC. What is that? If any outsider person, जो भी एक outsider person है, law के language में we call him as, hello, yes. So an outsider person in law के language में we call that person as adulterer. What is meaning as adulterer? दिवाली में खाते हैं आप adulterated मिठाई, मिलावट वाली मिठाई खाते हैं ना? वैसे ही एक अच्छी जिंदगी में जो हस्बैंड और वाइफ की अच्छी फैमिली लाइफ शुरू है, ये अडल्टर, ये बाहर वाला पर्सन है जो अडल्टर है, he comes there और उसको मालूम है ये किसी की माँ है, बच्चे की माँ है, किसी की वाइफ है, फिर भी उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके he does sexual intercourse, so that offense is called as adultery. Is that clear? What is adultery? So adultery is basically एक ऐसा ऑफेंस है जो मैरिड वुमेन के साथ ही किया जा सकता है. जो बाहर वाला अडल्टरर है, he knows, मैंने as I repeat, किसी के बच्चे की माँ है, किसी की वाइफ है, फिर भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, so that is called as that person, he has committed an offense of which offense? Of adultery under section 497 of IPC. Now यहाँ पे हमारा आज मेन डिस्कशन क्या है? जोसेफ श्राइन केस का हमारा मेन डिस्कशन है. So why I started with article 14 and article 15? There is a main reason कि हमने article 14 और 15 हमने क्यों शुरू किया है? क्या है इसका? As I said, adultery is a criminal offence under section 497 of IPC, and now the IPC has been changed to Bharatiya Nyaya Sanhita. Only the man was punished, the woman was not. This is the main important statement we all have to focus on. Only the man, only the adulterer, the outside person, जिसको मालूम है ये कौन है, उसके साथ फिर भी sexual intercourse किया, that person was punished and not others. Clear? Yes. Law treated the wife as a property of husband, and wife has no right to file a complaint. Okay? So यहाँ पे पहले BNS में अगर वो husband he was going to police station, अगर husband police station जाके केस रिपोर्ट करता तो वो अडल्टरर को मिनिमम 7 years की सजा थी, जो सिर्फ वो अडल्टरर को ही थी. As I said, when I started my career, I started with IPC. That was in the year 2013-14 में I started teaching IPC first. And आप में से एक स्टूडेंट फटाक से उठ गया, उसने बोला मैडम ये तो इनजस्टिस है कि वो पर्सन को ही सजा क्यों है? Why only the adulterer will be punished? Why the wife is not punished? वाइफ को भी पनिशमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइफ को पनिशमेंट क्यों नहीं मिला? वाइफ को भी पनिशमेंट मिलना इंपॉर्टेंट है. Why she is not punished? So why she is not punished? What will be the answer? Why there was no punishment for women? Women का consent था, वो चीज में consent था. When they did sexual intercourse, तो उसमें consent उसका था, right? अगर consent नहीं होता तो what it would have been called as rape. Consent नहीं होता sexual intercourse में, so against her will is called as rape. But यहाँ पे consent है, so what it is called as adultery हो गया ये offense. तो women को सजा क्यों नहीं है? Anyone can answer this question? Women को सजा क्यों नहीं थी और men को ही सजा थी? Yes, let us keep it interactive. I want new students also. Yes, hold on. Please stand up and answer this. You want to say? He wants to say there is no specific law for it. Anyone else? तुम्हाला जे वाटते in whichever language you are comfortable. What you feel की त्या बाईला शिक्षा आहे, कोणाला वाटते की बाईला पण शिक्षा मिळायला पाहिजे? त्या माणसाला 7 वर्षाची शिक्षा. That person is getting 7 years punishment. And why for not for the woman? You want to say that because of? He wants to say male-dominated society. Anyone else? The answer is the female was always treated inferior to male, and it is considered as patriarchal, the male-dominated society, as we say.
कि एक मेन को सुपीरियर पोजीशन दी गई है और वुमेन को हमेशा इंफीरियर पोजीशन दी गई थी कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकती. She can't do anything on her own. She can't do anything on her own and वो बाहर वाले अडल्टर ने ही कुछ किया होगा and that is the reason why this act has taken place. क्लियर? मतलब फीमेल को हम इंफीरियर पोजीशन दे रहे थे. जब आर्टिकल 14 क्या बोलता है? दैट इज व्हाट वी डिस्कस एट स्टार्ट. इक्वालिटी बिफोर लॉ. ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड, रिलीजन. तो फिर यहाँ पे आप अपने अधिकारों के लिए आप इक्वल हो, पर सजा लेने की जब बात आती है, पनिशमेंट देने की जब बात आती है, तब आप इक्वल क्यों नहीं हो? तब मैं इंफीरियर हूँ, तब तुम सुपीरियर हो. हम जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जब राइट्स में हम समान हैं, तो सजा में भी हम समान हैं. Yes, all of you clear? So basically the adultery, when you talk about adultery is basically the adulterer has a sexual intercourse with a married woman who is wife of some other person and also उसके बच्चे भी हो सकते हैं. Yes. यहाँ पे एग्रीड पार्टी कौन है? दुखी पार्टी कौन है? Who will go and complain? दुखी मैन, which man? अडल्टर जाके कंप्लेंट करेगा, अरे मुझे सजा दो. हस्बैंड, he is the दुखी पार्टी. वो बोलेगी अरे मेरे वाइफ के साथ ऐसा हुआ है. He is the aggrieved party who will go and complain against the offense of adultery under section 497 of. But now Joseph Trine case, in this case, this case has changed the picture of Indian criminal system, and now even the adulterer has no punishment for the offense. जो 7 साल की सजा थी adulterer के लिए, वो सजा अभी निकाल दी गई है. So now even the adulterer doesn't get punishment. Is that clear, all of you? Yes, let us move. ये आज ये जो बहुत से वैसे रिकॉर्ड से पॉज नहीं So कर everyone here? Okay, thanks. मस्त काफी जंगल एक बार कागज तोड़ देना रे. So what was the old law? Not taking much of your time. I know what stress you are under. Not taking much of your time. What was the old law? Old law क्या बोलता था? जो IPC का old law क्या बोल रहा था? 497. Married man has a sexual relation with a married woman without husband's consent. Now we come on this word, husband's consent. अभी हस्बैंड का कंसेंट का मीनिंग क्या है? अगर हस्बैंड के कंसेंट के साथ अगर वो वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वो अडल्ट्री नहीं है. पर अगर हस्बैंड का कंसेंट नहीं है तो वो अडल्ट्री है. मींस व्हाट? हस्बैंड को क्या समझा जा रहा था वाइफ का? मास्टर की सारा रिमोट कंट्रोल वाइफ का मेरे हाथ में है. मैंने बोला कर तो करेगी, नहीं बोला तो नहीं करेगी. यस. सो अर्लियर लॉ सेक्शन 497 बोलता था कि हस्बैंड वाज द मास्टर ऑफ वाइफ एंड ही वाज, इट वाज मैरिज वाज कंसीडर्ड एज एन ओनरशिप की ये मेरी अमानत है, मैं जैसे चाहूँ इसको यूज करूँ. अगर हस्बैंड गोज एंड वो पैसा गैम्बलिंग में पैसा हार जाता है एंड इफ हिज फ्रेंड सेज कि अरे सेंड योर वाइफ टू मी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स देन आई विल नॉट गिव यू एनी मनी. अगर वो कंसेंट के साथ शी गोज एंड शी डज दैट टाइम इट इज नॉट अडल्ट्री. अदरवाइज इफ शी डज विदाउट कंसेंट दैट टाइम इट इज अडल्ट्री. Is that clear? All of you understood this? Yes. So marriage was considered as ownership. Okay.
was section 497 considered patriarchal? Because women की कोई autonomy नहीं थी, women को कोई freedom ही नहीं था. Husband ने consent decide कर रहा था कि वो criminal है कि नहीं है. Okay? Woman was treated as a passive object. She was not considered as an active object. उसका कोई खुद का decision मायने नहीं रखता था. She was considered as passive object. कि मैं जैसा बोलूँ वैसे तुझे करना है. But very important thing कि law change होने के बाद भी still the husband, if he wants to divorce his wife on ground of adultery, ये ground husband के लिए open है. But 99% of adultery cases cannot be proved in the court because the main important element, the essential element which is required is basically the sexual intercourse. And how are you going to prove it in the court? Until unless you have some CCTV camera or some CCTV footage, right? So without that, it is very difficult to prove. And 99% of cases of adultery cannot be proved in court. ओके सो ये जोसेफ शाइन नाम का जो बंदा आया, ये पर्सन ने 2017 में सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए याचिका दाखिल की. उन्होंने बोला आर्टिकल 14, 15, मैंने ऑलरेडी आपको बोला व्हाट इज आर्टिकल 14 एंड व्हाट इज आर्टिकल 15. आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, right to live with dignity, like to live with respect. So that is Article 21, and he said that adultery is a private matter. It is not a crime. वो अपने मर्जी से कर रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इट इज नॉट एन क्राइम. और आपको सजा देनी है तो आप दोनों को सजा दो, अडल्टर आल्सो एंड दैट मैरिड वुमेन आल्सो. आप क्यों कर रहे हो? अधिकार लेते वक्त हम समान है और सजा लेते वक्त हम इंफीरियर है. दैट इज द टुडेज मैसेज. Clear? So law discriminated against women. Law said that women are inferior. They hold a very inferior position, and only men hold a superior position. Supreme Court ने judgment दिया 2018 में. Supreme Court ने बोला adultery is no longer a crime. It is a very important decision. Along with that, so triple talaq was also a landmark decision in Supreme Court. Law was discriminatory, unconstitutional था. Marriage is private and state cannot police morality. Women are equal partners and not property. Women equal partner है, उनको अधिकार है डिसाइड करने का उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है. But still punishment निकालने के बाद भी they have seen that both दोनों का भी जो अडल्टर का punishment था वो उन्होंने निकाल दिया, which was amounting to 7 years. Impact on Indian criminal law, इसका impact क्या हुआ? वुमेन की इक्वालिटी स्ट्रेंथन हुई. आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वुमेन की इक्वालिटी स्ट्रेंथन हुई. यहाँ पे इट शोड दैट वुमेन आर आल्सो इक्वल. व्हाई समवन आस्क्ड मी इन क्लास ओनली कि मैम उसको सजा क्यों नहीं है, एंड आई रिमेंबर आई वाज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. आई स्टार्टेड वेरी अर्ली and I said, hey, let me find out. I'll go to library after 2-3 days. I'll give you that answer. And that person started arguing with me in class badly. नहीं मैडम ऐसे कैसे, उसको सजा होनी चाहिए, उसका कंसेंट है. And then when I researched for 2-3 days, I think she is considered as abla nari. Woman has been given the status of abla nari. She can't do anything on her own. She doesn't have any her own decisions. Nothing is there. Clear? So what happened after this? Women की जो equality थी, women की equality strengthen हो गई, women का freedom strengthen हो गया, और उसको privacy और dignity जो आर्टिकल 21 का main base है, ये उसको recognition, उसको broader recognition मिल गया, जहाँ पे men and women are equal before law. Yes. Gender justice perspective also we have to see. Women को equal citizens पकड़ा गया, जो already Indian Constitution बोल रहा था under Article 14 they are equal, पर हम पकड़ नहीं रहे थे. जो ये आर्टिकल को उन्होंने decriminalize करने के बाद women को भी equal status मिल गया. Victorian moral control जो हो गया वो eliminate हो गया. Marriage as a partnership and not ownership. Marriage is a partnership. पहले सिर्फ adulterer को सजा देके उन्होंने क्या था कि हस्बैंड की कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इट इज नॉट अडल्टरी, तो ये पार्ट निकाल दिया गया. सो मेन इंपॉर्टेंट इज पार्टनरशिप है मैरिज, इट इज नॉट ओनरशिप कि मेरी तुम मैं जैसे बोलूँ कि वैसा करने वाली तुम रिमोट कंट्रोल में चलने वाली नहीं हो. क्लियर? मेजर विक्ट्री फॉर जेंडर जस्टिस. जेंडर जस्टिस के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस वेयर इक्वालिटी फर्स्ट टाइम इक्वालिटी जो पनिशमेंट अडल्टर को भी था वो निकाल दिया गया. Conclusion,
Joseph Fenn का judgment is just not about adultery, but it talks about equality, it talks about dignity, it talks about personal liberty. So Indian Constitution के तीन important articles, Article 14, Article 15 and Article 21 जो अधिकार है respectfully जीने का, खुद के decision से जीने का, respectfully जीने का, अच्छी हवा, अच्छा पानी लेने का, that all comes under Article 21 Indian Constitution, freedom. It put patriarchy on trial and upheld constitutional values, and it was for the first time it said that यहाँ पे women एक अबला नारी नहीं है. So यहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे हुई थी कि women को भी एक status मिल गया कि they are equal before law, और जो injustice हो रहा था men के साथ कि punishment लेते वक्त सिर्फ men को punishment और women को कोई punishment नहीं, why she is an अबला नारी, that is the reason why no punishment. तो वो भी equality equal हो. Is that clear all of you? So this was called as a decriminalization of adultery, that is section 497 of IPC. Decriminalization मतलब पहले it was a criminal offence for the adulterer, not for the woman. Yes, but now this that punishment जो है 7 साल की punishment वो निकाल दी गई है, and now it has been decriminalized. So men and women are equal before law, irrespective of caste, color, sex. Yes, with that we conclude. Short and sweet. Thank you, ma'am. झालं का आता बंद करू घ्या. नाही ना राहू दे. बंद केला हे नाही केला ना तू. माझ्याकडे गेलो तो बोलतो त्रास झाला बंदच करणार नाही 22-25 काय झालं आपल्याला Dr. Purve presented a clear and well-researched analysis of the Supreme Court judgment effectively explaining how the Supreme Court decision challenged long-standing patriarchal interpretation within Indian criminal law. Her discussion on the historical background of Section 497, the Constitution was principles of equality and autonomy, and the transformative impact of the value for clarity to all participants. The seminar highly engaging, informative, and encouraged the audience to reflect on broader issues of gender justice and legal reform. Dr. Purve ma'am's expertise and interactive approach made the session both enriching and impactful. We express our heartfelt gratitude to Dr. Purve ma'am for her time, knowledge, and contribution to enhancing our understanding and significant milestones. And a special thanks to our HOD Neha Pranavde ma'am for organizing this wonderful seminar. And we also thank all